విశాఖపట్నంలో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ 2026లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు. We now request our guests to look ahead. You would notice a large number of colorful sails on the horizon. Sail training is not merely an ode to the earliest form of wind power, but also an essential skill that enhances the understanding of how the forces of nature act on a vessel. अब हम अपने मेहमानों से अनुरोध करते हैं कि वे जहाज के सामने बाईं ओर देखें. आपको क्षितिज पर बड़ी संख्या में रंगीन पाल दिखाई देंगे. सेल ट्रेनिंग न केवल प्रणोदन के सबसे शुरुआती रूप पवन शक्ति के प्रति एक सम्मान है, बल्कि यह एक आवश्यक कौशल भी है जो यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति की शक्तियां नौकाओं पर किस प्रकार कार्य करती हैं. On the port side, ladies and gentlemen, is the parade of sails. The first two vessels are INSV Mahade, skippered by Lieutenant Commander Dilna K. Shaurya Chakra, and INSV Tarini, skippered by Lieutenant Commander Rupa A. Shaurya Chakra. These vessels and their skippers have achieved what very few on the planet ever have. They circumnavigated the globe, over 36,000 nautical miles, carrying the Indian tricolor across continents, oceans, storms and ice-cold winds. देवियों और सज्जनों, बाईं ओर आप देख रहे हैं परेड ऑफ सेल. पहली दो नौकाएं आईएनएसवी मादई, जिन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के शौर्य चक्रा संचालित कर रही हैं, और आईएनएसवी तारिणी, जिनकी स्कीपर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. शौर्य चक्रा. गौर करने की बात है कि इन दोनों नौकाओं और स्किपर्स ने विश्व परिक्रमा की हुई है और ये नारी शक्ति का सशक्त प्रतिनिधित्व करती हैं और भारतीय नौसेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है. INSV Neelkant, skippered by Lieutenant Ankit, is proudly hoisting the Indian tricolour sail, signifying command, control and India's sovereign presence at sea. Following in line are INSV Kadalpura, skippered by Commander T.S. Bisht, and INSV Haryal, skippered by Lieutenant Commander Ravindra Yadav. Following them are professional yachtsmen led by Lieutenant Commander P.R. Patil in fast, small sailing craft, along with NCC and SCC cadets and naval sailors proudly carrying tricolour sails, reflecting the seamless integration of experience, training and youth within India's maritime ecosystem. रक्षा भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से सक्षम है. From our eastern neighbor, Myanmar, we have Union of Myanmar ship King Ong Zea on your right-hand side. She is commanded by Commander Ye Win Thaw. म्यांमार का यह युद्धपोत अपनी क्लास का मुख्य जहाज है और एक मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के रूप में काम करता है. She is Myanmar's first indigenous guided missile frigate